Today, I'm going to start the topic of PERT and CPM. PERT and CPM are two techniques of scheduling. PERT stands for Program Evaluation and Review Technique, and CPM stands for Critical Path Method. The two techniques are basically same. The only difference is that PERT is probabilistic technique while CPM is deterministic technique. In both the techniques, we make a network diagram where all the activities in a given project are shown diagrammatically. Circles, which are called as nodes, are used to denote the start or end of an activity. Arrows depict the relationship between activities. In both the cases, in PERT as well as CM, we depict the activities using symbols, using a network diagram where we use symbols like circles and arrows. CPM and PERT both developed simultaneously. CPM developed in a DuPont plant when DuPont company was establishing a new plant. The technique they developed to schedule the activities of this project came to be known as critical path method, and PERT was developed by US Navy for a missile launch program. In both the activities are for scheduling of activities of a project, and in both the activities we try to find out the relationship between various activities, whether any activity can be performed without depending upon other activities, or some activities dependent upon other activities. In both the cases, we know time associated with each activity. So this is a network diagram. You can see here 1 to 2, 2 to 3, 1 to 3, 2 to 4. All these are activities. And the numbers that are written over here, 3, 2, 7, 4, 6, these are the duration of these activities. Now, we must know the precedence. Precedence means what are all the activities that we need to finish in a given project, and which activity can start without any preceding activity, and which activity is preceded by other activities. So that will give a precedence relationship. Means कौन सी एक्टिविटी को हम बिना किसी एक्टिविटी के डिपेंडेंट एक्टिविटी, उसमें कोई एक्टिविटी डिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है, और कौन सी एक्टिविटीज हैं जो प्रायर एक्टिविटीज के खत्म होने के बाद ही चालू की जा सकती हैं. So network diagram is used to show the precedence of activities. अगेन यहाँ पर हम सारी एक्टिविटीज को एक के बाद एक डिनोट शो करते हैं नेटवर्क डायग्राम की मदद से, और जो एक्टिविटीज सबसे पहले कंप्लीट होनी है वो पहले दिखाई जाएंगी, उनके बाद जो एक्टिविटीज होनी है वो उनसे रिलेटेड आगे दिखाई जाएंगी. इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्टिविटीज, तो फर्स्ट नोड होगा वो इनिशियल नोड होगा, और लास्ट नोड जो होगा वो एंड नोड होगा. और जैसे जो एक्टिविटीज के बीच में डिपेंडेंस होगी वो हमें शो करनी पड़ेंगी. क्रिटिकल पाथ
इन दोनों टेक्निक्स में हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल पाथ वो सारी एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल पाथ पर आती हैं जिनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने इन क्रिटिकल एक्टिविटीज को कि स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को चेंज किया तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। So in both the methods, CPM and PERT, we try to identify the critical activities. Slack time is the time that is available, that can be tolerated. जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनमें हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, तो जितना हम डिले कर सकते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में उसका नाम है स्लैक टाइम। अगेन सीपीएम जो है डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक है। डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक का मतलब क्या है कि हमें सारे एक्टिविटीज के जो टाइम है सीपीएम में हमें वो सारे टाइम श्योरिटी के साथ पता होते हैं। पर्ट जो है उसमें हमें जो टाइम एस्टिमेट्स हैं वो हमें श्योरिटी के साथ नहीं पता होते हैं। हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट्स हैं, ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन, पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन एंड मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन। एंड इन तीनों की हेल्प से हम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालते हैं। पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन वो है कि अगर हम जो भी टास्क कर रहे हैं वो करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो जो टाइम लगेगा उस एक्टिविटी को करने को, दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन। पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन वो है जो कि हम अगर हमारी एक्टिविटी करने में हमें कुछ डिलेज होने लगे तो जो टाइम लगने वाला है उसको हम पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन वो है जब पहले कभी किसी ने ये प्रोजेक्ट में ये एक्टिविटी करी है और जितना टाइम लगा है, दैट इज मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन। इन तीनों का वेटेड एवरेज है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, जिसको हम टीई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम को टीओ से, पेसिमिस्टिक टाइम को टीपी से एंड मोस्ट लाइकली को टीएम से। टीई इज एक्सपेक्टेड टाइम and it is a weighted average of the 3 time estimates. So TE is equal to TO plus 4TM plus TP divided by 6. वेरिएंस निकालते हैं हम इसमें TP माइनस TO होल स्क्वायर डिवाइड बाय 36. स्टैंडर्ड डेविएशन एज वी नो इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो SD निकल आएगा। So its value will be TP minus TO upon 6. Okay, so if the critical duration of a project comes out to be 44 weeks and SD is 2 days, then 44 days कर देते हैं इसको। 44 days है क्रिटिकल ड्यूरेशन, SD 2 days है, तो प्रोजेक्ट का 44 plus 3 into 2, 3 times standard deviation, that is 44 plus 6, that is 50, and 44 minus 6, that is 38. तो 100% चांसेस हैं कि 38 से 50 डेज में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के चांसेस जो हैं वो 95% है। 44 plus 4 that is 48, 44 minus 4 that is 40. तो ये 40 to 48 डेज में ये प्रोजेक्ट खत्म होने के चांसेस कितने हैं? 95%। तो पार्ट में हमें जो एस्टिमेट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक। हमारे पास हर चीज की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, जबकि सीपीएम में हमें श्योरिटी के साथ हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन मालूम है, तो क्रिटिकल ड्यूरेशन भी हमारी श्योरिटी के साथ निकल कर आती है। तो यहाँ पर जो की टर्म्स हमने दी वो एक्टिविटी है। जैसे कोई भी हम टास्क कर रहे हैं, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसमें एक्टिविटीज होती हैं कि साइट को पहले एक्वायर करना होता है, फिर उस साइट की लेवलिंग करनी होती है, फिर आप उस साइट की फेंसिंग कर सकते हैं, उसको चारों तरफ से बाउंड्री बना सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट एक्टिविटी होती है कि उसका एक्सकवेशन करें और मतलब we have to start digging the foundation. Then once the foundation then we have to start making the foundation.
Once foundation is made, then we start the process of making the upper building. So these are all activities. ये सारी activities हैं. Acquiring the land एक activity है, labeling the land another activity है, making the boundary wall of the land another activity है, start digging the foundation that is another activity. So ये सारी activities होती हैं किसी project में. कोई book लिखने का project है तो उसमें activities क्या होंगी कि first of all you have to write the manuscript of the book. Next step क्या होगा, उसको आप पढ़ेंगे और उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो रिव्यू करेंगे आप उसका. Once you have got the complete manuscript ready, then you will give it to a publisher. Publisher will print a first copy of the book and then give it to you for proofreading. And you may make certain changes in the proofreading. Once your final copy is ready, it may go for publication. So these are the activities in writing a book and publishing a book. Critical path वो sequence of activities है जिसमें कि zero float हो, जिसमें कि slack zero हो या float zero हो. Means we cannot tolerate even a single day delay in these activities. If you delay these activities even by a single day, overall duration of the project will be increased by 1 day. Next है duration. Duration is the actual time required to complete an activity. जो भी time चाहिए उस activity को complete करने के लिए, जैसे for example we have taken an activity to lay the foundation of the building. इसमें अगर हो सकता है आपको 20 दिन लगे, तो 20 दिन is the duration of the activity. Resources are the all the things that we need to perform our project.